That problem is like check if one single swap can make the strings equal. ओके, तो हम एट अ टाइम सिर्फ एक सिंगल स्वैप कर सकते हैं एंड हमको ये चेक करना है क्या वो सिंगल स्वैप is able to make the strings equal or not. Okay, let's for an example, if my string is like B, A, N and K, so this is our string 1. और जो सेकेंड स्ट्रिंग होता है वो कुछ ऐसा होता है कि K, A, N and B. Okay, these are the two strings. करना है कि कहाँ पे swap हुआ है and in which area swap doesn't happens. Okay, I'm checking for the thing that is swap is there or swap is not there or it's not there. Okay, अगर वहाँ पे swap होता है then I will be writing it as 1. Okay, if it is not swap नहीं होता है तब हम क्या लिखेंगे, then I will be writing it as 0. Okay. So let's check for the index number 1. So index number 1 में क्या है, string 1 is holding B, string 2 में क्या है K. So B is equal to K, not B K के इक्वल नहीं होता है, और अगर इक्वल नहीं होगा, अगर इक्वल नहीं होगा मीन्स वहां पे स्वैप हुआ है. ओके, एंड इफ वहां पे स्वैप हुआ है देन रिजल्ट bool will be containing 1. Okay, this is the area where swap is happened. Let's check for the second index. Second index में क्या है, दोनों में a है, so means that swap is not happened. Then the third index n means swap is not happened. Then the last index swap is happened. So from this expression what we get, I get two zeros, one number of zeros are 2 and number of 1 is also 2. Okay, so this is a case where string is like bank. Let's say for the second example say how to study. So for the second example, s1 is equal to attack. Okay, okay, s2 is equal to defend. Defend. Okay, so first of all what we need to check, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि length of both these string are equal or not. Length of strings. Okay, words, number of the letters in these strings would be same. जो strings में letter होने चाहिए वो same होने चाहिए, like bank. So each word, like if you call, if you make a dictionary of the bank here, then B is one time, A is also one time, N is also one time, and K is also one time. So this is a dictionary for S1. If I make a dictionary for S2, then K is one time, A is also one time, N is also one times, and B is also one times. Okay, so this dictionary 1 is equal to dictionary 2, means number of letters is equal to is same, and the repetition is also same. Number of letters and repetition is same. Same for two strings. Okay, so these are the two things firstly जो हमको चेक करना होगा. Now the thing is, third thing is, इसके बाद हमको क्या देखना है, इसके बाद हमको क्या लगाना है, at each index I am checking for there is a swap or there is not any swap. Okay, so इन तीन points को लेके I will be writing down the whole code. Okay, let's try the coding stuffs. So first of all I want to do this, that is length checking. Okay, अब I'm given this function. Okay, इसके अंदर string 1 जाएगा और इसके अंदर string 2 जाएगा. We are having two things. Now what to do, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना था length of these strings are equal. Okay, so I will be having a simple check. अगर length of s1 is equal to length of s2. Okay,
और फिर क्या करना है, उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि नंबर ऑफ द लेटर्स सेम होने चाहिए एंड रेपिटेशन वुड बी सेम. सो व्हाट आई फेल्ट लाइक टू सॉल्व दिस थिंग, इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू समथिंग लाइक, लेट्स से आई एम हैविंग द फर्स्ट स्ट्रिंग, हमारे पास एक फर्स्ट स्ट्रिंग होता है दैट इज बैंक. ओके, एंड आई एम हैविंग द सेकंड स्ट्रिंग. तो फर्स्ट स्ट्रिंग है बैंक, सेकंड स्ट्रिंग है के ए एन बी. ओके, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी, तो मैं क्या करूँगी, मैं S1 को शॉर्ट कर लूँगी. ओके, और S2 को शॉर्ट कर लूँगी. ओके, लेट्स सी हमको मिलेगा क्या. अगर हम S1 को शॉर्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ABNK. ओके, सिमिलरली अगर हम S2 को शॉर्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ABNK. ओके, सो दिस इज व्हेन, अगर मेरा S1 और S2 इक्वल होगा तो शॉर्टेड फॉर्म ऑफ S1 एंड S2 विल बी ऑल्सो इक्वल. ओके, लेट्स से कि अगर मेरा S1 अटैक होता. ओके, this is my S1 and S2 is like different. ओके, तो अगर ये केस होता, तो अगर मैं S1 को सॉर्ट कर देती एंड S2 को अगर सॉर्ट कर देती, देन ऑल्सो व्हाट आई वुड बी गेटिंग, मुझे क्या मिलता, AACKT इज नॉट इक्वल टू DDEEFN. ओके, तो देन ऑल्सो आई वुड गेट कि ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं होती. ओके, सो विद दिस इंट्यूशन इन आवर हैंड, व्हाट आई विल बी डूइंग, यहाँ पे एक सिंपल सा चेक और लगेगा एंड आई नीड टू चेक व्हाट सॉर्टेड फॉर्म ऑफ द S1 इज, अगर ये सॉर्टेड फॉर्म ऑफ S1 भी इक्वल होता है सॉर्टेड फॉर्म ऑफ S2 के, देन आई नीड टू प्रोसीड. इसके बाद हमने क्या कर लिया है, अब यहाँ तक हमने क्या कर लिया, ये स्टेप 1 को देख लिया, लेंथ वाला सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, सब प्रॉब्लम 2 सॉल्व कर लिया. ओके, अब क्या बचता है, दी थर्ड वन, कि अब हमको क्या करना है, सारे इंडेक्स में जाना है और स्वैप और अनस्वैप देखना है. ओके, सो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन हैव अ फंक्शन सेल्फ डॉट काउंट mismatch. Okay, count mismatch and I will be passing S1 and S2. तो अगर मेरा लेंथ इक्वल होता है और नंबर ऑफ द लेटर्स भी सेम होते हैं, तब हमको क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है. तो लेट्स से कि मैंने एक फंक्शन बनाया है काउंट मिस मैच. इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर 2 स्ट्रिंग्स पास करेंगे. देन हमको क्या करना है, सबसे पहले नाउ व्हाट आई विल, ओके, सो इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे हम, तो ये फंक्शन बस क्या करेगा, स्टार्ट टू एंड कंपेयर करेगा ईच इंडेक्स. ओके, ये करना है इसको. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर लूप रन कर सकते हैं, आई इन रेंज, कहाँ तक, दोनों की लेंथ सेम है तो हम कुछ भी ले सकते हैं. और हमें क्या कर देना है, हमको एक इफ लगा देना है, अगर S1 का जो आई है, मतलब स्टार्ट है, वो इक्वल हो जाता है S2 के स्टार्ट के बराबर, S2 की आई के बराबर. ओके, तब क्या कर देना है, अगर ये बराबर होता है देन इट्स फाइन फॉर अस, इफ दे आर इक्वल देन इट इज फाइन फॉर अस. बट अगर ये अनइक्वल होता है तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको काउंट करना पड़ेगा. तो काउंट मिस मैच इज इक्वल टू 0. अब क्या करना है, अगर ये ऐसा मिलता है तो हमको काउंट को इंक्रीज कर देना है, दैट इज काउंट ऑफ मिस मैच प्लस प्लस. ओके, is equal to count of mismatch plus 1. ओके, एंड इसके बाद हमको इसको रिटर्न कर देना है जो भी वैल्यू होगा इसका, mismatch. ओके, so let's try to analyze one more so let's try to analyze one more example is like BANKO and F. Okay, this is my string 1. String 2 is like KANBO and F. Okay, so these are the 2 strings and I am saying I need to see one swap. And one swap का क्या मतलब होता है, one swap means
One swap means there is change detected for two index. Okay. अब लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस सेंटेंस कि चेंज डिटेक्टेड फॉर दी टू इंडेक्स. लेट्स से कि हमने पहले एक वेरिएबल बनाया था दैट वाज रिजल्ट boolean. Okay, so in the result boolean what I was doing जहाँ पे swap होता था where there was a value change, then what I was writing 1. Let's try to do the same. Like b is not equal to k, I will be writing 1. A is equal to a, I will be writing 0. N is equal to n, I will be writing 0. Then b is not equal to k, I will be writing 1. O is equal to o, I will be writing 0. F is equal to f, I will be writing 0. So what I can see, I am having two ones here, means the count is here. Count की value क्या है यहाँ पे 2 है. So इफ द काउंट, अगर क्या होता है, अगर मेरा काउंट का वैल्यू 2 होता है, देन व्हाट आई कैन से देयर इज अ स्वैप, अ सिंगल स्वैप. देन व्हाट आई कैन से अ सिंगल स्वैप कैन make the strings same. Okay, so with this intuition again I will code some more. Okay, now अभी तक क्या करा था हमने, अभी तक हमने फंक्शन कॉल कर दिया था. Okay, अब what I need to do. Okay, so from this function, I will be getting a count value. So count val is equal to this one. It will be returned by this function. ये function हमको count val लेता है. अब हमको क्या करना है? अब हमको simply एक check perform करना है. What is this check? If your count val is equal to 0, okay, or if your count val is equal to 0, or your count val is equal to 2, then what to do? Return true. It can be changed. Else what you can do? Else you need to return false. Okay. So yeah, we get the all the test cases passed. And our code is also accepted. So this is going to the solution. How to solve this problem.